Hello everyone. Welcome back to this course on quantitative methods, the semester 7 course in your 4th year. Okay. This is the Get Your Stats Straight series, and in the previous lecture we started with setting the econometrics straight, right? So we started with econometrics, and the basic idea was to motivate and tell you कि econometrics में करते क्या हैं हम, है ना? How is it a direct follow up from what we do in stats. Is essentially we're doing the same thing, looking for the truth, right? But truth of a different kind, of a related kind, is not exactly different, right? So we are in econometrics looking for the truth of the relationship between two variables. And then we talked about the simple linear regression model, the population regression function, the sample regression function. And while doing all that, we also ended with the interpretation of a given regression equation or estimated equation as we have it. So let us take it up from there. We will continue from there. We will move from the simple linear regression model now on to the multiple linear regression model. But before that, we will also discuss what I told you, what the statistical properties of these OLS estimators. And then hopefully we will finish off with discussing the multiple linear regression model along with the inference part. All right, so let's get started. Okay, so we stopped at when we discussed the interpretation of one of the models that we said that, this is the level of satisfaction with NEP among your DU students and how that is related to their CGPA. है ना? तो हमने ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाया कि सपोज ऐसा अगर इक्वेशन मिलता है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा. ठीक. Now, you also must have come across models like, so this was a very simple model where we looked at, NEP, okay, as a function of, so you had, I guess, 40 point something, 40.15 plus 0.51 CGPA, right? What we see here is that you can plot it like this, यहाँ पे CGPA, यहाँ पे NEP, और मिल गया हमें एक equation, ठीक? एक straight line की equation मिल गई हमें. Now, oftentimes you've also come across models that look like this. You look models like log wage, right, is equal to some, say, beta naught hat plus beta 1 hat into education, right? So we are trying to look at that how education, or how wage varies with education, or how much of the variation in wages can be explained by the education of the employee. है ना? उसके अलावा you also must have seen models like okay, that is multiple linear regression. We'll come to it a little later. Log model के अलावा, you must have also come across models that have log on both the terms, right? So log of wage is equal to, say, beta naught hat plus beta 1 hat. Suppose log of IQ score. ठीक. So हम जब यहाँ पे ये कहते हैं कि हम what are we looking at? We are looking at, this is a model of, this is a simple linear regression model, right? So we are saying that this is simple because we have only two variables, but anyways, simple linear regression model, है ना? तो हम कौन सी लिनियरिटी की बात कर रहे हैं जब हमने लॉग इंक्लूड कर लिया. हम बाद में जाके स्क्वायर टर्म भी इंक्लूड करते हैं, है ना? हम अपॉन भी इंक्लूड कर सकते हैं. हम किस टाइप की लिनियरिटी के यहाँ पे कसमे वादे खा रहे हैं जब हम ऐसे नॉन लिनियर टर्म्स इंक्लूड कर रहे हैं. इफ यू ड्रॉ प्लॉट ऑफ दिस, यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? यू विल गेट अ कर्व्ड लाइन, है ना? तो यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लिनियर in the SLRM is linear in parameters. I explained to you कि parameters क्या है ना? मैंने पहले बता दिया कि parameters क्या है. पहचान, family में individual की पहचान है parameters. In the family of straight lines, the parameter is the slope and the intercept, right? So the only concern about, so what we mean by linear regression model is that the model, the parameters
राइट। ये तो खैर एस्टिमेटेड इक्वेशन हो गया, मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, मॉडल में यू विल नॉट हैव द हैट्स, राइट, सो यू आर मॉडलिंग द रियलिटी। सपोज लॉग वेज is equal to beta naught plus beta 1 education. So these are your parameters. All that matters is कि parameters linear form में enter हो रहे हो तुम्हारे मॉडल में. Okay, that is what linearity means. So you cannot have a parameter that looks like this. You cannot have a parameter that looks like this, right? You cannot have a parameter that looks like log of beta 1, है ना, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, राइट। योर पैरामीटर्स हैव टू एंटर द इक्वेशन इन अ लिनियर मैनर। वो है लिनियरिटी का अजम्पशन। मतलब हम ये जब हम कह रहे हैं हम लिनियर मॉडल बना रहे हैं तो हमारे पैरामीटर्स लिनियरली मॉडल में एंटर होने चाहिए, पैरामीटर्स। बाकी वेरिएबल्स का जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन है बाद में व्हेन वी डू ऑल काइंड्स ऑफ प्रूफ्स about the estimation of these parameters. So you don't have to get into the detail of all that, but what you have to understand that what linearity essentially means over here. Okay, all right. So today we will start with, so when you have this, when you, the only thing that you need to be concerned about is linearity of parameters, then you can have various kinds of functional forms, है ना। और ये बाद में जाके मल्टीपल जब लिनियर एनालिसिस करेंगे तो हम और भी एग्जांपल्स एक आध देख लेंगे, बट ये ऑलरेडी डन। लॉग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राइट। सो यू कैन इनकॉर्पोरेट के कोई नॉन लीनियर फंक्शन हो, दो वेरिएबल्स के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, लॉग में रिलेशनशिप हो, ठीक, क्यूब में रिलेशनशिप हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, ऑल दीज थिंग्स यू कैन टेक केयर ऑफ, ठीक। Okay, so today we will start with the first thing that we will start with is the statistical properties, right? So the statistical properties of our OLS estimators, मतलब beta naught hat और beta 1 hat, जिसका meaning what I explained in the last class was basically, ये तो हो गई algebraic बातें जब हम algebraic properties की बातें करते हैं, which means that these are going to hold in any sample, right? In any sample you will have that the sample covariance or sample correlation between the explanatory variables and the residual will be zero. In any sample, you will always have that the sample mean of x and y will lie on the SRM. ठीक है? The sum of residuals in any sample always zero. तो ये सारी कोई भी particular sample में हमेशा ही सच होंगी, and these will be true by the way in the manner in which the OLS estimators have been derived. Right? So if you have done the proofs, if you remember them, you will see that these are nothing but the first and the second order conditions of the maximum likelihood estimation. So by derivation, they are correct. They have to hold. ठीक। सो अब हम जाते हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो स्टेटिस्टिकली होल्ड करती हैं, विच मीन्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेटा द OLS एस्टिमेटर्स एज एस्टिमेटर्स। मतलब हम बात करें कि अगर रिपीटेड सैम्पलिंग करोगे, है ना, अगर तुम बार बार उन्हीं मतलब DU में से यू कीप ऑन सैम्पलिंग किड्स एंड एवरी टाइम यू कैलकुलेट बेटा नॉट हैट एंड बेटा 1 हैट, है ना, ये भी खुद भी रैंडम वेरिएबल्स है, वी ऑलरेडी नो दैट। जस्ट लाइक एक्स बार भी एक रैंडम वेरिएबल है, उसका रैंडमनेस सैंपल से आता है, उसी तरह हमारे बेटा हैट्स भी रैंडम वेरिएबल है। हर बार नया सैंपल निकालोगे, हर बार नया बेटा नॉट हैट बेटा 1 हैट मिलेगा। सो स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि ये जो सारे रिपीटेड सैम्पलिंग हो गए उसमें उनकी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी। जब अगर इफ यू आर एबल टू डू रिपीटेड सैम्पलिंग और इफ यू आर एबल टू डू अ कंप्यूटर सिमुलेशन, व्हाट विल द मीन लुक लाइक, है ना। बेटा नॉट हैट का मीन कैसा होगा, राइट। क्वेश्चंस अबाउट दिस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेटा नॉट हैट, expected value of beta 1 hat, right? The variances of beta naught hat and beta 1 hat, right? Plus the distribution. So these are the statistical properties. How are they going to behave if we are able to do repeated sampling? Statistically कैसे behave करेंगे, right? And this is where we look for those properties of unbiasedness and minimum variance, है ना, याद है। तो हम मतलब हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा एस्टिमेटर चाहिए जो कि ऑन एवरेज करेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सैंपल में करेक्ट हो, बट ऑन एवरेज वो करेक्ट हो। और हमको मिनिमम वेरिएंस भी इसलिए चाहिए कि अगर करेक्ट ना भी हो तो भी मीन के अराउंड
क्लोज, मतलब मीन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही लाई करे। दैट इज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एन एस्टिमेटर, क्योंकि अल्टीमेटली वो मीन ढूंढना, वो ट्रू पैरामीटर का वैल्यू ढूंढना ही उसका मकसद है जीवन का। ठीक, तो मकसद तो नहीं भूलना है। उसके लिए हमको ऐसा चाहिए क्या नाम है, एस्टिमेटर जो कि मीन के ऑन एन एवरेज मीन के करीब हो, और as you increase the sample size, it is actually able to get you very close to the mean. It doesn't have very large variance around the mean, right? Okay. So then these are the kinds of things that we are looking for when we are talking about statistical distribution, right? Statistical properties. All right. So when we talk about statistical properties, तो हम कुछ set of assumptions पे काम करते हैं, ठीक है? So So what are these assumptions? If you've done your econometrics in your fourth semester using Gujarati, so you must have seen कि Gujarati ऐसे मतलब randomly the book throws these assumptions at you. The reason for these assumptions is that the desirable qualities, the desirable properties of these estimators, which is unbiasedness and minimum variance, ये जो desirable qualities है ना, they hold under a set of assumptions, और ये वो ही assumptions। तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो हमारा मॉडल और हमारा सैंपल और हमारा पॉपुलेशन है ना, अगर ये कुछ कुछ assumption satisfy करेंगे, तो हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं ये कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब भी हम उसमें से सैम्पलिंग करना चाहते हैं, जब भी वी आर बिल्डिंग अ मॉडल आउट ऑफ इट, आवर एम देन बिकम्स टू satisfy these assumptions as closely as possible. Because once these assumptions are satisfied, the desirable statistical properties of the estimators will follow on its own. इसीलिए वो assumptions इतने इंपॉर्टेंट है। वो assumptions क्या कह रहे हैं कि अगर ये assumptions तुमने satisfy कर दिए, तो तुम्हारे जो एस्टिमेटर्स हैं उनके अंदर दो तीन बड़ी बढ़िया क्वालिटीज होंगी, क्वालिटीज जो हमको चाहिए, अनबायस्डनेस एंड मिनिमम वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, और उसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग अजम्पशन सेटिस्फाई करोगे नॉर्मैलिटी वाला, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, है ना। तो दैट मीन्स कि तुम्हारे जो एस्टिमेटर्स हैं वो बहुत ही मतलब दे विल बी वेरी गुड एस्टिमेटर्स, right? They will have everything that you need. They'll be very good at estimating the underlying true parameters of the model. अब वही हमको चाहिए, इसीलिए हम इन assumptions को इतनी तवज्जो देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम मतलब these are the assumptions that we want satisfied, and then we discuss in detail कि अगर नहीं satisfy होगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। सो अभी जो इस क्वांटिटेटिव वाला सेमेस्टर 7 का कोर्स है तुम्हारा, दैट एक्चुअली डिस्कसेस दैट व्हाट हैपेंस इफ योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन फेल्स, ठीक। और उसको रेक्टिफाई करने के जो सारे तरीके हैं वो है तुम्हारा यूनिट 1। we'll get to it later, but right now let's begin small. So what we are saying is that the statistical properties uh, sorry, so we say that these statistical properties hold under a set of assumptions. And then all you have to do is, whenever you're doing any analysis, all you have to do is make sure that you're satisfying these assumptions. Easier said than done, but हमको at least direction तो मिलेगी करना क्या है। अगर ये assumptions satisfy होंगे तो हमारे estimators बढ़िया काम करेंगे, ठीक है ना। So let us see what those assumptions are. I'll just briefly explain to you. The first assumption is linearity in parameters, ठीक है। So first assumption is linearity in parameters, something that I've just explained to you what it means. That your model should have or in your model the parameters should enter linearly. उसके पावर के साथ साथ इधर उधर खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा एक लीनियर इन पैरामीटर्स मॉडल बनाया तो तुम्हारा एक assumption satisfied है। ये तो अपने हाथ में है बिल्कुल ही, मॉडल तो हमने ही बनाना है, तो हम बना देंगे ऐसा मॉडल, ठीक। द सेकेंड इज दैट यू हैव अ रैंडम सैंपल, ठीक है ना।
रैंडम सैंपल का मतलब है कि तुम्हारे सैंपल में बायस नहीं है. दिस इज समथिंग अगेन दैट आई विल कम टू लेटर when we are talking about violations of the assumptions. But random sampling, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा क्रॉस सेक्शनल डेटा है, as I explained in the previous class, cross sectional data satisfies the assumption of random sampling the most closely. ठीक है. सो इफ यू हैव अ गुड, लाइक तुमने ऐसा स्नोबॉल टाइप का सैंपल नहीं कलेक्ट किया है, अच्छे से रैंडमाइज किया है, अच्छे से क्रॉस सेक्शनल डेटा कलेक्ट किया है, देन यू आर वेरी लाइकली टू लैंड अप एट अ रैंडम सैंपल. So if your model is linear in parameters, if your sample is random, the third assumption is that if there is a variation in x, ये एक बहुत ही you can say that this is a very obvious assumption. मतलब why are we even stating it as an assumption? रीजन इसका क्लियरर होगा जब हम मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन करेंगे. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि x जो भी वट एवर इज योर x वेरिएबल, राइट, हमारे केस में x was CGPA. Whatever is your x variable, there should be a variance in x, which means कि सारे के सारे x का वैल्यू एक ही ना हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स को CGPA में 8 ही ना मिले हुए हों. There should be a variance 0 से लेके 10 तक, राइट. 0 से जरूरी भी नहीं है, जितना भी वेरिएंस हो पॉजिटिव वेरिएंस. और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, बड़ा इंट्यूटिव है. हम किसी चीज में वेरिएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि एनईपी में इतना वेरिएशन दिखता है, एनईपी के सेटिस्फैक्शन लेवल्स में. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ वेरिएशन. हाउ कैन वी एक्सप्लेन अ वेरिएशन विद समथिंग दैट इज कांस्टेंट, राइट. यू नीड वेरिएशन टू एक्सप्लेन वेरिएशन. इसमें वेरिएशन होगा तभी इसका वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर सबका CGPA 8 ही है तो उसमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है उधर CGPA में जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है. कुछ नहीं पता चलेगा, राइट. सो देन वी नीड दैट देयर हैज टू बी वेरिएशन इन x. All your x values cannot just be equal to a constant. ठीक. Then the next one we have is that x's are non-stochastic. Well, this is a simplifying assumption that usually comes in use when we are calculating the variance of these estimators. Okay? Again, I will not go into details. The idea is that it's a different way of stacking, So if you are able to prove something for a given values of x's, right? And then there was no predetermined way in which you chose those x's. ठीक है. सो जो कुछ भी इन x वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है, द सेम थिंग विल होल्ड फॉर एनी रैंडम x वैल्यूज, राइट. सो इट जस्ट बिकम सिंपलर कि हम x के एक गिवन वैल्यूज के साथ काम करें. कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस लेना आसान हो जाता है. इट इज ऑल्सो ए सिंप्लीफाइंग assumption. इन एक्चुअलिटी x नॉन स्टोकेस्टिक नहीं होते. अब बाय द वे स्टोकेस्टिक का मतलब पता है ना, स्टोकेस्टिक इज प्रोबेबिलिस्टिक. सो वी आर सेइंग दैट x's आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग, which means that we are assuming that every time the x values are the same, right? वो ही CGPA के वैल्यूज हैं, बट उसके रिस्पॉन्स में y वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं, NEP की वैल्यू सेटिस्फैक्शन वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं. अनरियलिस्टिक लग सकता है, बट ये सिर्फ सिंप्लीफाइंग है. इसके कहने का मतलब है कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी इन एक्सेस के लिए होल्ड करती है जो हमने अभी फिक्स कर दी, तो ये प्रॉपर्टी किसी भी एक्सेस के लिए होल्ड करेगी, क्योंकि इन एक्सेस के बारे में देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. वी जस्ट सिंप्लीफाइड आवर एनालिसिस बाय सेइंग कि इनमें से थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए अनसर्टेनिटी हटा देते हैं. But you can bring back uncertainty, things will remain the same. So it is a simplifying assumption that x's are non-stochastic, they are fixed in repeated sampling. ठीक है ना? All right, the fifth assumption is the most important assumption from the point of view that I'll get to later, which is called the zero conditional mean assumption, which basically says that the expected value of the error terms, ठीक है, given the x values is equal to 0. Let us understand that what this assumption says. Before that, the sixth assumption I will also specify, which is homoscedasticity. All right. These two assumptions I will explain in a bit more detail.
जीरो कंडीशनल मीन क्या कह रहा है? पहली बात तो ये जीरो एसेंशियल नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज सेइंग इज दैट for any x value, think about this graph that we had, right? So we said that for any given x value, for any given CGPA value, there was various possible values that your y can take, है ना? जो भी y के वैल्यूज थे एनईपी सेटिस्फैक्शन लेवल, भले तुम्हारे x का वैल्यू सेम है, बट y का वेरिएंस तो हमको दिख रहा है ना, एक एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। जो भी तुम्हारा PRF है चाहे SRF है, दैट इज नॉट प्रेडिक्टिंग एवरी रियल वैल्यू एग्जैक्टली, है ना? सो इट इज गिविंग सॉर्ट ऑफ एन एवरेज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अभी क्या कहने का मतलब है कि ये मान लो कि ये है PRF। अच्छा, also to notice is that all the assumptions, remember, are about, except for this one, all the assumptions are about the population. ठीक है? Why is that? Because population is something that we do not know clearly about. Sample के बारे में हमारे पास सारी जानकारी है, सैंपल के बारे में अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, राइट? बट पॉपुलेशन के बारे में हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में सारी चीजें। ठीक है? सो फॉर द पॉपुलेशन वी आर अज्यूमिंग कि जो ट्रू रिलेशनशिप है, दैट ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन एनईपी एंड द सीजीपीए वेरिएबल इज linear in parameters, right? Then we are saying that there is of course variation in x, or x's are non-stochastic in repeated sampling, ये सब सिंप्लीफाइंग है। रैंडम सैंपल इज द वन दैट वी आर सेइंग कि सैम्पलिंग का जितना भी बार तुमने रिपीटेड सैम्पलिंग किया, दैट वाज रैंडम। ठीक? देन द जीरो कंडीशनल मीन, सो व्हाट इट सेज इज दैट ये हमारा सपोज PRF है और ये डिफरेंट एक्स वैल्यूज हमने दिए, हर एक्स वैल्यू के लिए देयर इज अ वेरिएशन इन y वैल्यूज। ठीक? मतलब कि ये हमारे डिफरेंट UIs हैं, एरर्स हैं, है ना? एरर्स विच मीन्स के जो अनऑब्जर्वेबल्स हैं। तो this difference, this difference, this difference, right? This difference, this difference, this difference, फिर इधर भी ये हम क्या कह रहे हैं? If you take an average of these UIs conditional on the x values, मान लो कि x वैल्यू जब x1 थी तो तुमने इन UIs का एवरेज निकाला, इसका एवरेज ऑन एन एवरेज दे विल बी जीरो, and they will not only be zero for this x1, they will be zero for x2, they will be zero for x3, they will be zero for x4, and whatever possible values that your x can take. मतलब on an average अनऑब्जर्वेबल्स का सम करोगे तो वो जीरो होंगे। अजम्पशन है ये, ठीक है? अजम्पशन है, हम कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कभी इस टाइप की, राइट? ऐसी भी सिचुएशन नहीं होगी कि suppose for a given x value this is what you have, and for another given value this is what you have, and for another given value this is what you have. इनका मीन कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इनका मीन कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और इनका मीन कहीं यहाँ पे लाई करेगा। नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? इफ दिस हैपेंस द assumption is not satisfied basically, right? So what it means is कि जो अनऑब्जर्वेबल्स है ना, वो मीन की वैल्यू पे ऑन एन एवरेज डिपेंड नहीं करते हैं। द वैल्यू ऑफ द अनऑब्जर्वेबल्स do not depend on the value of the x variables. So ऐसा नहीं है कि जब तुमने x की वैल्यूज को बढ़ाना शुरू किया, right, then unobservables started taking higher and higher positive values. This is what this assumption says. Now this assumption is very crucial for any claim to causality, for any claim to what we call ceteris paribus. Right? Now, I want you to hold on to it right now because I want a much more detailed discussion on ceteris paribus and the causality thing, क्योंकि वो bedrock है इस आने वाले कोर्स के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग bedrock है आने वाले कोर्स के लिए। So उसके ऊपर अभी के लिए I just want you to have a sort of mechanical understanding that what we are saying. We are saying that the average value, the expected value of the unobservables should not be
different for different x values. ये 0 भी हो सकता है, ये कोई constant भी हो सकता है. It can be just some constant, right? Suppose it can be 5, any number. But the thing is that it has to be 5 for this, for x1, for x2, for x3, for any x value. Unobservables on an average बदलते नहीं रहने चाहिए as you change the x values. ठीक? This is what we are saying. The next one is homoscedasticity, which says that the variance of u given x should be equal to a constant. Remember, ये और ये दो चीजें हैं. ये कह रहे हैं, let's look at this example. The zero conditional mean assumption says that given any PRF, right? The और PRF की भी actually जरूरत नहीं है. Given any, x values, right? Suppose कि ऐसा ग्राफ तुमने देखा होगा. Let me draw it like this. All right. So this is your x-axis, this is your y-axis, this is your z-axis. अभी तक हम x और y-axis पे काम कर रहे थे, right? So then we are saying that on the x and z-axis, x and y-axis, this is your PRF. And then we say that for any given x value, the average should be the same. ठीक है? So ये जो भी disturbance है इसके अराउंड सबका एवरेज जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है? ये हम कह रहे हैं. बट एवरेज सेम होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसका वेरिएंस भी सेम हो. एवरेज सेम हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि इस वाले का वेरिएंस इतना हो, इस वाले का वेरिएंस कम हो, इस वाले का वेरिएंस ज्यादा हो, राइट? या फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वेरिएंस भी बढ़ रहा है. द स्प्रेड इन द वैल्यूज दैट योर y कैन टेक, व्हिच इज द वेरिएंस. एरर का वेरिएंस इज y का वेरिएंस आल्सो. So the spread in the values that your y can take keeps on, suppose increasing जैसे x का value increase होता है. That is what is called heteroscedasticity. Scedasticity is basically variance. तो variance जब different है, hetero है, heteroscedasticity. But variance जब same है, homoscedasticity. ठीक? So then, if this is the case that your variance is actually, the spread is the same, no matter the value of x, then we are talking about homoscedasticity. So ऐसा टाइप का ग्राफ तुमने देखा होगा. Right? This is actually making a stronger statement, which says that not only is the mean and the variance same, but the distribution is also the same. ये normality assumption होता है, not required for the statistical property that we are going to discuss. ठीक है? So then you can imagine this as in 3D, है ना? ये जो Z मैंने बनाया है 3D के लिए, इफेक्ट के लिए बनाया है. पता नहीं कितना इफेक्ट आया है इसमें, but this is what we are trying to do. We are trying to say कि 3D में इन नॉर्मल कर्व्स को इमेजिन करो, एंड वी आर सेइंग कि उसका मीन और वेरिएंस सेम है. एक्स के वैल्यूज चेंज करने या नहीं करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑलराइट? सो द एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी वांट टू मेक एन अजम्पशन कि एरर्स जो हैं वो एक्स के वैल्यूज पे उनका मीन डिपेंडेंट नहीं है, एक्स के वैल्यूज पे उनका वेरिएंस भी डिपेंडेंट नहीं है. Cool? All right. So then when we have all these assumptions satisfied, right, then we have the property that under these assumptions, OLS estimators are unbiased. Okay,
So we are going to say unbiased का मतलब है that the expectation of beta naught hat is equal to the actual beta naught and the expectation of beta 1 hat is equal to the actual beta. Cool. So they are unbiased. This also gives this is the first property. ठीक है. Second property is the variance का expression. So variance of beta naught hat and variance of beta 1 hat का एक expression आता है, right? Under these properties. And the third one is that under these properties, under these assumptions, okay, under these assumptions, which are called the Gauss Markov assumptions, right? These assumptions are called. Now, what does Gauss Markov mean? These are the names of two people. ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब भी कुछ ऐसा अतरंगी शब्द समझ दिखाई दे, समझ जाना कि किसी का नाम है, उसके नाम के ऊपर रखा गया. So under these assumptions, which are called the Gauss Markov assumptions, OLS estimators are what are called blue. Blue क्या है? Best linear unbiased estimators. Okay. Best का मतलब है minimum variance. Unbiased का मतलब है we know, right? So we are only looking in the class of estimators that are unbiased, right? So unbiased का मतलब है that the expectation of the estimator is equal to the true parameter. What does linear mean over here? यहाँ पे linear का मतलब अलग है, ठीक? यहाँ पे मतलब है कि they are linear functions of the y variables, ठीक है? So this is linearity, which means कि जो भी sample के वो है ना values हैं y के, उसके ये linear functions हैं. So y doesn't appear as square or something. So don't worry too much about it. All right. So then this is why, so if you have these assumptions satisfied, you will have the best linear unbiased estimators if you use the OLS method. OLS estimators best होंगे, minimum variance होंगे. जितने भी एक तो unbiased तो होंगे, लेकिन तुम बाकी unbiased estimators भी कलेक्ट कर लो, जो कि हो सकते हैं, ठीक? सब में से सबसे मिनिमम वेरिएंस इनका हो, है ना? इसीलिए ये assumptions इतने जरूरी हैं, इसीलिए we keep on talking about, you know, satisfying these assumptions. Okay. So now after this, let us get started with the multiple linear model. I don't think there was anything before that. Okay. So now this was the first thing that we did, which was state the statistical properties. Now let's get to the multiple linear regression model. और अब हम थोड़ा सा कॉजालिटी मोटिवेट करने की तरफ चलते हैं, ठीक है? Now suppose we said that जो भी example से we are working, right? So we are working with the example of NEP satisfaction being linked to CGPA, ठीक? और इस example में मैंने कहा था कि भाई NEP satisfaction levels को determine करने के बतेरे factors हो सकते हैं, है ना? CGPA तो इकलौता factor है, right? एक कोई इनमें से factor है, but there can be many other things. So what we said was ये बाकी जो other things हैं इनको कौन capture कर रहा है? Error term capture कर रहा है ना? ये एरर टर्म क्या है? वो ये बता रहा है कि सब कुछ तुम्हारा सीजीपीए को इंक्लूड करने से प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा. यू गिव मी अ वैल्यू ऑफ अ सीजीपीए, I will give you a prediction for the NEP satisfaction level, but most likely that will not be the actual value of NEP satisfaction, है ना? उससे वेरी करेगा, एक डिफरेंस रहेगा तुम्हारे प्रिडिक्शन में और एक्चुअल वैल्यू में, which we call the error या फिर the unobservable.
And what is this unobservable actually representing? This is representing the effect of those other factors, right? It is representing कि NEP को determine करने पे CGPA के अलावा ये बहुत लोगों की मेहनत लगी है. These are the factors that you have not incorporated in the model. ठीक है. अब हमारा जो, अगर सपोज के हम ऐसा क्लेम करें, है ना, कि an increase in CGPA, this is the equation that we had, right? This is the equation that we had, that your NEP was a positive function of plus 0.51 CGPA, right? So we said that your NEP was a positive function of CGPA, and suppose we try to make a statement that an increase in CGPA causes NEP to increase by 0.51. NEP satisfaction levels to increase by 0.51. Can we make this statement? The answer is no. Usually we cannot make this statement. क्योंकि तुम सोच के देखो, suppose जब CGPA improve होता है ना, एक example, I'm just giving you one example. Can you make this causal statement? Can you say that increase in CGPA caused an increase in NEP score? ये एक unambiguous statement है और ये एक बहुत ही strong statement है. ठीक है. Why? Let's think of a reason why it may not be the case. We know that NEP हमने discuss किया था. One of the reasons that can go into determining your satisfaction levels with NEP is your household family income, right? One of the reasons could be your household family income. अब हमको usually पता है कि this is the model that we have, right? NEP is equal to beta naught. This is the population model plus U, right? So CGPA of individual I, NEP of individual I, and the uncertain or unobservable part of individual I. अभी क्या है, ये I में एक चीज तो हमको पता है, फैमिली इनकम. Now we know कि जो ये CGPA है, generally higher family income means more privilege, means more that you've already been to better schools, that your parents are already well educated, that they were able to help you in studies, and when you go back home, you're able to give more time to studies as compared to someone who is of a less privileged background. है ना. तो इस बंदे को या बंदी को, you know, they have to go back, maybe they also have to do some part-time job, or maybe their parents were not that educated, they didn't get to go to very good quality schools. So usually you will see that CGPA is higher on average. CGPA is higher for higher income families, right? CGPA is directly proportional to family income. अब इस केस में क्या होगा, जब तुमने ये देखा कि CGPA इंक्रीज होने से हमारे को ऐसा इक्वेशन मिलता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप. इट कैन वेरी वेल बी द केस दैट what you are capturing as the increase in CGPA is actually because coming from the increase in family income. The effect that you observe, right, is actually the effect of family income. CGPA से मे भी फर्क पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा हो, लेकिन असली फर्क पड़ता है फैमिली इनकम से. हो सकता है ऐसा, वी डोंट नो फॉर श्योर, बट वी डेफिनेटली नो कि ये पॉसिबिलिटी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, राइट. सो देन इफ यू डू नॉट इंक्लूड फैमिली इनकम, यहाँ पे हो क्या रहा है पता है? Think when we talk about in terms of statistically what is happening, when I say that CGPA is directly proportional to family income, and family income is a part of the error term, what we have is that the expected value of U given X is not 0, or rather is not constant.
क्यों? जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है CGPA, इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। यू में क्या है? फैमिली इनकम इज अ पार्ट ऑफ द एरर टर्म ना। मान लो कि एरर टर्म में सिर्फ फैमिली इनकम ही है, तो हमको क्या मिला यहाँ पे? हमको मिला कि यू जो है, राइट, जो फैमिली इनकम है, जैसे जैसे CGPA इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव कोवेरियंस दैट वी हैव between CGPA and family income, the expected value of family income keeps on increasing. So if your expected value of family income, if your average family income for a CGPA of someone, say अगर CGPA 5 है और average family income suppose 3 lakhs per annum है, right? If on the other hand your CGPA is say 9 and the average family income is say 20-30 lakhs per annum, तो ये this is what is happening here. And your fourth or या जो भी था fifth assumption is not satisfied, which means कि जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे OLS की अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड नहीं करेंगी। Your OLS first of all will not be unbiased. इसका मतलब तुम चाहे जितना रिपीटेड सैम्पलिंग कर लो, क्या होगा? तुम्हारा जो OLS का एस्टिमेटर है, बेटा नॉट हैट एंड बेटा वन हैट, they will on an average also they are not going to be correct. Their expected value is not going to be equal to the true parameter, the true population value, right? So what happens is over here, it is possible when this happens, मतलब एरर में कुछ ऐसा टर्म है जो तुम्हारे एक्सेस से कोरिलेटेड है ना। अगर एक्सपेक्टेशन, अगर मीन वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे तुम्हारा एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, अनदर वे टू से दिस is that the covariance between u and x is not zero. There is relationship, there's some sort of systematic relationship between things that are in your error term like family income and things that you have included in your model which is CGPA. और अगर ऐसा होगा तो सोचो इंटुइटिवली क्या हो रहा है। इंटुइटिवली ये हो रहा है कि तुमको जो लग रहा है कि CGPA की वजह से हो रहा है, वो CGPA की वजह से नहीं हो रहा है, वो फैमिली इनकम की वजह से हो रहा है। एक बारी अगर तुम फैमिली इनकम को CGPA से रिप्लेस कर दोगे तो हो सकता है योर रिजल्ट्स विल गेट बेटर। A more realistic thing to do is CGPA को भी रखो और फैमिली इनकम को भी ऐड करो, और तब हम आते हैं उस जोन में जहां पे हम बात करते हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन की, जहां पे तुम्हारे पास एक से ज्यादा एक्स वेरिएबल्स है, राइट? सो यूजुअली इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, आई एम जस्ट गिविंग यू आई मीन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट अगर फैमिली इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनईपी के लिए, so once you include family income in the model you will get something like this. Of course your this value will change. Suppose this value is now something similar, suppose 42.28, इस पे इतना importance नहीं है, plus you will get that the coefficient, ये coefficient था ना, this is called the coefficient of CGPA. एक और ऐड करोगे वेरिएबल तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। So the coefficient of CGPA will actually go down, right? It may go down to 0. I don't know, say 1.2. And then you see that the coefficient of family income is a much higher number, right? So what this sort of result shows कि एक्चुअल में CGPA का जो इन्फ्लुएंस था ना, CGPA का जो एक्सप्लेनेटरी पावर था on your NEP satisfaction level was much smaller. The actual explanatory power was coming from family income, right? So then एक तरीका, मतलब हाँ, तुम्हारे पास एरर में अगर सिर्फ और सिर्फ फैमिली इनकम था, the best thing you can do is फैमिली इनकम को डायरेक्टली मॉडल में उठा के ले, right? This is what we do is in multiple linear regression, right? And then we at least जो भी तुम एरर से उठा के अंदर ले आते हो उसके बारे में फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। रिमेंबर, इसके बाद भी एरर टर्म हमेशा रहेगा, इसके बाद भी MLR मतलब जो भी तुम्हारा जीरो कंडीशन मीन वाला अजम्पशन है उसके वायलेट होने का डर भी हमेशा रहेगा, बट इसके ऊपर हम फिर अब
नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि जो जीरो कंडीशनल मीन अजम्पशन है वो फिर भी कैसे वायलेट हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जो भी हमको दिमाग में आ रहा है जो एनईपी को अफेक्ट कर सकता है, नाउ वी आर एबल टू डायरेक्टली ब्रिंग दीज वेरिएबल्स इनटू द मॉडल, and that is where we get into the realm of multiple linear regression, right? So instead of making claims like or trying to satisfy this assumption, हमने अगर ये assumption हमको satisfy करना होता तो हमको क्या चाहिए होता कि हमारे पास सीजीपीए तो ऊपर नीचे होता रहे, बट उस हिसाब से फैमिली इनकम एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका प्रोग्रेशन को फॉलो ना करे, समथिंग दैट इज नॉट ऑब्जर्व इन द रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड की रियलिटी नहीं है। ठीक, so then next class we'll talk about the ideal experiment and everything, but right now what we can do is, अगर हमको लग रहा है कि सीजीपीए के अलावा भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एनईपी को और हमें क्या करना है, एनईपी का वेरिएशन एक्सप्लेन करना है, तो सीजीपीए के अलावा जो जो फैक्टर्स लग रहे हैं डालो उनको, फैमिली इनकम डालो, मे बी बच्चे का जेंडर डालो, बच्चे का और कोई सोशल स्टेटस के वेरिएबल्स हैं वो डालो, राइट, स्कूल के मार्क्स डालो, और यू कैन ऐड अदर फैक्टर्स लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्मेंस है वो भी डालो, जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ एनईपी को ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। मे बी यू ऑल्सो इंक्लूड के कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, जब कोर्सेज ही नहीं ऑफर हो रहे तो बच्चा क्या करेगा चौथे साल। मे बी यू ऑल्सो इंक्लूड के बच्चे को फ्यूचर में करना क्या है, इफ द किड इज सपोज गोइंग फॉर यूपीएससी तो मे बी फोर्थ ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ द किड इज प्लानिंग टू गो इनटू पीएचडी, इफ दे आर प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स तो फोर्थ ईयर करना चाहेंगे, एनईपी से ज्यादा खुश रहेंगे वो लोग। ठीक है, सो देन ऑल दीज अदर फैक्टर्स गेट टू have a role in determining how satisfied or how happy you are with the 4-year program, with the NEP program. ठीक, तो if data is available, the first step is to put them together and then you will be able to explain a larger part of the variation, a larger part of the variance of NEP, right? This is what we do in the multiple linear regression. So a usual model will look like this, that your y, right, I, ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है, दिस इज द y वेरिएबल ऑफ द ith इंडिविजुअल इन द सैंपल या इन द पॉपुलेशन, मॉडल बना रहे हैं तो पॉपुलेशन की बात करते हैं, है ना। तो yi मतलब जो भी NEP वेरिएबल है ऑफ द ith इंडिविजुअल is related to the other x variables like this. So you have an intercept term, you have beta 1 times x of the ith individual, x1 of the ith individual, है ना। तो तुम्हारे पास अगर 5 x's है, x1 x2 x3 x4 x5, then x1 of the ith individual, x2 value of the ith individual, right, 2i या i2 जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, all the way till if you have k x variables, so then you have x i k, and then कहीं नहीं जा रहा है आपका एरर टर्म। अब क्यों यहाँ भी एरर टर्म होता है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि तुम चाहे किसी को कितने भी अच्छे तरीके से जान लो, तुम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। इन अ सोशल सेटिंग, इन अ सोशल साइंस kind of subject, there will always be something that you are unable to observe. You cannot be so smug to assume कि मेरे को सब कुछ पता है, I've controlled all variables. You cannot, right? It is not a controlled environment. हो सकता है कि किसी इंसान का एनईपी से उसको इसीलिए नफरत हो क्योंकि उसने कोई न्यूज में बुरी खबर सुन ली, राइट, इसलिए नफरत हो क्योंकि जो पॉलिसी मेकर है उससे उसको नफरत, इसीलिए नफरत हो क्योंकि I don't know, the friend circle is such that the person gets bullied or person doesn't feel at home, blah blah blah, right? So then there will always be something that you are unable to account for. Okay, that you have to be humble enough to acknowledge that, and your model will always have the error term, चाहे कितना भी k variables add कर लो, right? So this is a usual multiple linear regression model for you. Then let us now discuss कि इसका interpretation क्या होगा, वो important है, और उसके अलावा तो rest of the things simply follow from the simple model. Okay, so
द इंटरप्रिटेशन देन इज दैट दिस इज द मॉडल दैट आई रोट, है ना, इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं. सो देन व्हाट वी से इज दैट, देखो अगर ऐसा लिया है, और कैलकुलस थोड़ा बहुत भी आता है ना, अभी तक तो आना चाहिए, फोर्थ ईयर में हो हम. सो कैलकुलस का मतलब अगर हम इसको ऐसे करें दैट व्हाट इज द चेंज इन एनईपी, level of happiness satisfaction, when there is change in CGPA, or another way to put it in calculus, del NEP upon del CGPA and del NEP upon del family income. इसका आंसर क्या है? 0.12, है ना. del NEP by del CGPA, you can do this calculus, बहुत ही एकदम ही बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन है. इसका आंसर है 0.1 और इसका आंसर है 0.448. What does this mean? बेटा वन हैट, ये बेटा वन हैट है, इसको हम बोलेंगे दिस इज योर बेटा नॉट हैट, बेटा वन हैट एंड बेटा टू हैट. ठीक है. बेटा वन हैट क्या बताता है? इट टेल्स यू द चेंज इन योर y वेरिएबल, राइट, द एक्सपेक्टेड चेंज इन y वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन x1, कीपिंग, रिमेंबर ये डेल है, पार्शियल डेरिवेटिव है. पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव इज यू चेंज ओनली वन वेरिएबल कीपिंग द अदर कांस्टेंट. इफ यू हैड k variables like in this model, then beta 1 is capturing what? Beta 1 is capturing the change in y per unit change in x1, keeping all the other variables constant, जो भी इस बीच में. This is called the partial, these are called partial coefficients and this is called the partial interpretation. ठीक. तो इसका मतलब है कि अगर तुम ये जो 0.12 है, this is making a much stronger statement. What is it saying? It is saying कि अगर तुम दो families को देखते हो, right, you look at two kids coming from two families, you hold their family income constant. Of course constant मतलब सेम लेवल पे होंगी नहीं ना, कोई भी दो फैमिलीज की सेम लेवल पे फैमिली इनकम होगी नहीं. बट हाइपोथेटिकली द थॉट एक्सपेरिमेंट इज, अगर तुम दो बच्चों को देखो जिनकी सेम लेवल ऑफ फैमिली इनकम है और जिनमें फर्क सिर्फ सीजीपीए का है, फैमिली इनकम सेम है, सीजीपीए का फर्क है, एक का सीजीपीए दूसरे से 1 यूनिट ज्यादा है, then the satisfaction with NEP of that student जिसका CGPA ज्यादा है will be higher than the other student by 0.12. All right. So what we are saying is that this is the statement that you must have read everywhere. Controlling for family income, a 1 unit increase in CGPA increases NEP happiness level by 0.12. This is the statement that you read. इसका मतलब क्या है? मान लो कि अगर दो फैमिलीज हैं जिनमें के बिल्कुल ही सेम फैमिली इनकम है, या फिर एक्सट्रीम केस में मान लो कि एक ही फैमिली है, वहां पे दो जुड़वा बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, ठीक, दोनों का सिर्फ फैमिली इनकम तो सेम है, तो सिर्फ फर्क है कि एक का सीजीपीए दूसरे से थोड़ा ज्यादा है. तो जिसका सीजीपीए ज्यादा है उसका एनईपी सेटिस्फैक्शन लेवल दूसरे वाले से 0.12 ज्यादा होगा. This is what this is saying. This is a much stronger statement and it is a much robust statement. ठीक है. जो पहले था जब हमने फैमिली इनकम इंक्लूड नहीं किया था तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सीजीपीए बढ़ाओ और एनईपी इतना बढ़ जाएगा 0.51. बट इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता कि सीजीपीए बढ़ने से फैमिली इनकम में क्या फर्क पड़ रहा है, राइट.
जस्ट टॉक्ड अबाउट द ऑब्वियस पॉसिबिलिटी कि सीजीपीए बढ़ रहा है तो फैमिली इनकम भी ऑन एन एवरेज बढ़ ही रही होगी। तो जो इफेक्ट हमको दिख रहा है वो सीजीपीए का नहीं है, फैमिली इनकम का है। अब यहां से क्या पता चल रहा है, जो 0.51 सारा इफेक्ट हमको लग रहा था फैमिली इनकम का, एक बार तुमने फैमिली इनकम को कंट्रोल कर दिया, मतलब आर्टिफिशियली उसे सेम लेवल पे फिक्स कर दिया। दिस मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल हेल्प्स अस टू व्हाट, इट हेल्प्स अस मिमिक एन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर पाते तो तुम दो लोगों को सेम फैमिली इनकम देते और बोलते कि सिर्फ सीजीपीए अलग रहेगा तुम्हारा, तब बताओ कि तुम कितना सेटिस्फाइड हो, तुम कितना सेटिस्फाइड हो। कर नहीं सकते ना ये, लेकिन कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस। तो सपोज दो लोग हैं जिनका फैमिली इनकम सेम है, अब हमको ये दिख रहा है कि अगर तुम फैमिली इनकम के लिए कंट्रोल कर लोगे तो सीजीपीए से फर्क 0.51 का नहीं पड़ रहा है, सिर्फ 0.12 का पड़ रहा है। सिमिलरली कंट्रोलिंग फॉर सीजीपीए, अब दो बच्चे हैं जिनका सीजीपीए सेम है बट उनका फैमिली इनकम अलग है, राइट? सो देन सीजीपीए सेम होने के बावजूद if the family income increases by 1 unit, then what do you have? NEP satisfaction increases by 0.48. Okay, so अब हमको इससे ये पता चल रहा है कि सारा का सारा और the majority of variation in NEP happiness level is explained by family income. And ये जो पहले दिख रहा था CGPA, ये साला imposter था, right? This is how a multiple linear regression model helps you to, at least take the first step and look at a bunch of variables and see कि किसका actual में contribution कितना है explain करने में, ठीक? So then for family income you will have that controlling for CGPA, a 1 unit increase in family income will increase NEP by 0.48. ठीक है? If you have multiple variables, then you will say that controlling for everything else, 1 unit increase in this particular X variable changes the Y variable by this much, right? This is it's getting you closer to a ceteris paribus, causality setting. Still not there, still not there. अगर पहुंच जाते तो इतने इस कोर्स का कोई मतलब नहीं था. Still not there, but definitely doing better. जो हम लोग ने सिर्फ एक वेरिएबल इंक्लूड करके बाकी सबको एरर टर्म में डाल दिया था. नहीं, अब हम वी आर टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, हम एरर से चीजें बाहर निकाल के डायरेक्टली मॉडल में डाल रहे हैं. Cool? Okay. So this is the interpretation part, and now let us quickly do the other things. So within this, the other things also include the statistical and algebraic properties, right? So ये बिल्कुल ही extrapolation है of whatever we have for the SLR, ठीक? So algebraic properties तो बिल्कुल ही extrapolation है, I won't get into the detail. And the statistical properties also are the same under those Gauss Markov assumptions. Your beta k hat, right? K can take value from 0 to your n, है ना? Sorry, 0 to k जितने भी variables हैं, तो कोई भी estimator जो है किसी भी बेटा का, that will be unbiased and have minimum variance. इसमें सिर्फ एक assumption में फर्क है. So properties में same as SLR, and statistical properties में जो assumptions हैं, जो Gauss Markov assumptions हैं, we have linearity, right? Linearity in parameters. We have random sampling, ये है दोनों same. We have non-stochastic X. उसके बाद हमारा है कि no perfect collinearity, right? उसके बाद जीरो कंडीशनल मीन तो है ही. This is a stronger condition.
and finally your homoscedasticity. Right? So let us talk about the no perfect collinearity, which is saying that हमारे पास सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या था कि एक्स में वेरिएशन होना चाहिए, है ना, सारे के सारे एक्स एक ही वैल्यू के बराबर नहीं होने चाहिए. द काउंटर पार्ट ओवर हियर इज दैट हर एक्स में वेरिएशन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी एक एक्स किसी दूसरे एक्स का, just one second, उसके अलावा द एडिशनल रिक्वायरमेंट इज दैट कोई भी एक एक्स, सपोज x1 जो है वो x2 का एक परफेक्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए दैट योर x1 example that your x1 is a perfect function of x2, for example 2x2. इसका क्या मतलब है? एक बार ही तुमने x2 का एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया तो x1 का सारा वैल्यू तो मेरे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना. They are perfectly collinear, right? Another example is that x1 is equal to 2x2 plus 3x3, a linear combination of two others. Again, you tell me the value of x2 and x3, I will give you the exact value of x1. इसका मतलब है कि x1 में कोई रेसिडुअल वेरिएशन नहीं है. कोई अपना वेरिएशन नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है उसकी, वो बस है वहां पे, तो उसके होने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि x2 में अपना कोई वेरिएशन नहीं है, और अगर अपना कोई वेरिएशन नहीं है तो वो पहला वाला असम्पशन ही वायलेट हो रहा है, उसमें कोई अपना वेरिएशन ही नहीं है. there's this, like it's bringing nothing to the table, right? It's bringing nothing into this relationship. वो बस लटक रहा है पीछे x2 के, या वो x2 और x3 के पीछे चल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है, इनफैक्ट अगर तुम इसे स्टेटा वगैरह में रन करोगे तो ये तो पहले ही ड्रॉप आउट कर देंगे, बोलेंगे कि x1 को हटाओ यहाँ से. बट अगर x1 को या any of these will be removed, but even if when you are doing the model, this should not be the case. This is what it means to be no perfect collinear. कोई भी एक x दूसरे एक्सिस का परफेक्ट लिनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, ओके. बट कोलिनियरिटी का मतलब लिनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए. यू कैन स्टिल हैव दैट योर x2 is equal to x1 square, allowed. You will see examples like that experience, right? So you are looking at के वेज जो है या लोगों की सैलरी जो है वो एक्सपीरियंस पे कैसे डिपेंड करती है. सो यूजुअली यू विल सी दैट यू हैव x1 equal to experience and x2 equal to the squared of experience, which is basically trying to capture a non-linear relationship between experience and salary. ये allowed है, this is allowed, this is not allowed. लिनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है. ऑलराइट, जीरो कंडीशनल मीन सेम है, बट जीरो कंडीशनल मीन एक स्ट्रॉन्गर अजम्पशन यहाँ पर है, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू of u given all combinations of x1 x2 and all that, this should be zero. ये काफी स्ट्रॉन्गर assumption है, but this can be easily worked out as that the error में किसी के भी साथ कोवेरियंस नहीं होना चाहिए. एरर शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद एनी ऑफ द एक्सेस, है ना. अक्सर हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है तो इसका इम्प्लीकेशन होता है कि कोवेरियंस और कोरिलेशन भी जीरो है. दिस इज अ प्रूफ दैट कैन बी डन, बट द आइडिया इज दैट अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है तो कोई कोरिलेशन नहीं है उनके बीच में, लिनियर कोरिलेशन नहीं है, राइट. सो देन दिस implies दैट नो कोरिलेशन between the error and independent variables, क्योंकि x क्या है, independent variables है. Remember, they are not independent of each other, they are called independent क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी है. वो जो स्टेटिस्टिक्स वाला इंडिपेंडेंस था वो यहाँ पे मतलब नहीं है. दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट क्योंकि जो y है वो डिपेंडेंट है इनके वैल्यूज पे. दिस इज हाउ वी आर मॉडलिंग. हम कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है इन कंपैरिजन टू
y, क्योंकि y इन पे डिपेंडेंट है according to the assumption that we are making. ठीक है, this is your zero conditional mean assumption. And finally your homoscedasticity is the same, right? So given any combination of x values, error का variance same होना चाहिए. This is what it means. Again, a strong assumption, but that is the assumption. And this means that error किसी भी x या combination of x के साथ correlated नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको फिर से ऐसी सिचुएशन में रन नहीं करना है, ये वाली सिचुएशन, right, where your income, right, which was in the error term, family income, was positively correlated with the x variable, which is CGPA. This is something that we do not want, right? So that is the assumption. So under these assumptions, again, your OLS estimators are blue. That property simply follows. Okay, so OLS estimators blue. Under these assumptions. Okay, all right. So now the last thing that we will do, which we will do very quickly, is inference and hypothesis testing. And we know that to do any this kind of analysis, inference करने के लिए हमको किसी भी estimator का पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है ना, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे हम होपफुली, है ना, मतलब सारे जो हैप्पी एंडिंग्स है हमारी, उन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में ये कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं, और अक्सर अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, राइट, सो तब हम उसको z में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर we have the ready-made results that we have, right? So for this we need the distribution, need the sampling distribution, and the sampling distribution is derived, sampling distribution of beta naught hat and beta 1 hat and all the other betas, सबके ही चाहिए. इसके लिए additional assumption है which is of normality. Normality of error terms. So हम न सिर्फ ये कह रहे हैं कि error terms का conditional mean 0 है, उनका conditional variance constant है, बट हम ये भी कह रहे हैं कि error terms का distribution normal, मतलब ये जो हमने ये पे कलाकारी की थी, ये this is how the errors look like. If this assumption is also satisfied, then we have, so if this assumption is satisfied, then along with the other previous assumptions, then we have that your beta naught hat and beta 1 hat are normally distributed. Right, so your एक second, so let's write it like this, that your beta naught hat is normally distributed with mean, हमको पहले ही पता है, these are unbiased, so mean is actually equal to the true parameter, and the variance which we have already, मतलब जो ऊपर लिखा नहीं मैंने for the complex expression, but whatever variance was calculated. Similarly, beta 1 hat will be normally distributed, mean will be, the expected value will be the true parameter value, and the variance will be whatever was calculated under those assumptions. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव इज कि अगर तो एरर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि अक्सर दिस assumption can be satisfied in most usual cross sectional data analysis, so then the beta hats will have a normal distribution around the true parameter values. और तब फिर हम वहीं आ जाते हैं, तब फिर अगर तुमको इन्फ्रेंस करना है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है 95%, तो उसका फॉर्मूला हमने z से यूज करके बना ही लिया है. अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, फिर से यू कैन गेट योर क्रिटिकल वैल्यूज यूजिंग द z डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. दिस इज द बेसिक आइडिया. इसमें एक और चीज होती है दैट यू वांट टू टेस्ट फॉर मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस, सॉरी लिनियर रेस्ट्रिक्शंस, इन विच यू आर लुकिंग एट की so I'm not going into
the details of this, right? This is exactly the same that we have done. So now you're just to before we go ahead, ये वाला जो expression था 40 point, whatever this was, 40.15 plus 0.12 CGPA plus 0.48 family income. So now you will have a standard error also over here, just like previous case में. So standard error क्या है? Standard error है कि जो standard deviation है उसका जो estimate है वो standard error है, ठीक? So अब बेटा नॉट हैट का एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक? बेटा नॉट हैट या बेटा वन हैट जो भी ले लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेरिएंस है, ठीक है? वेरिएंस है तो मतलब इसका अंडर रूट होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। अब बात ये है कि जब वेरिएंस तुम्हें पता लगाना होता है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए एरर टर्म्स का वेरिएंस, इनका जो भी एक्सप्रेशन होता है उसके टू 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 नो दी to calculate the variance of the estimator, you need to know the variance of the error term. But this is unknown. क्यों? क्योंकि एरर टर्म खुद ही अननोन है भाई। एरर टर्म तो पॉपुलेशन में है, हमारे पास तो खाली रेसिडुअल है ना। रेसिडुअल्स तो एक्चुअल एरर टर्म्स है नहीं, एरर टर्म्स के जैसे हैं, एरर टर्म्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट दे आर नॉट द एक्चुअल एरर टर्म्स। सो एक्चुअल जब पता ही नहीं है तो उसका वेरिएंस कैसे पता होगा, उसका वेरिएंस पता ही नहीं है तो इसका वेरिएंस कैसे पता होगा, ठीक? सो देन what we do is we actually using the residuals we estimate the variance of the error terms, right? तो इसका जब हम estimate यूज करते हैं we call it sigma square hat, और ये sigma square hat, sigma hat square हम यहाँ पे यूज करते हैं, इस फॉर्मूले में डालते हैं, तो तब ये स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टैंडर्ड एरर बन जाता है। स्टैंडर्ड एरर इज द एस्टिमेट of the standard deviation of the estimator. I'll just write it. So standard error is the estimate of the standard deviation of the estimator. All right. Standard error is the estimate of the standard deviation of the estimator. Cool. So जब हमको इस टाइप का estimated equation मिलता है, so then we get some standard error. Suppose इसका standard error है 0.012, इसका standard error है suppose 0.57, इसका है 0.031, some number, right? So then you will use the standard error to get the Z value. You will compare it to the critical value, see whether or not you can reject the null hypothesis. Usually the null hypothesis looks like that your beta 1 hat is equal to 0, right? Alternate is that your beta 1 hat is not equal to 0. So you are ready to accept proof in either direction. बहुत कम बहुत ज़्यादा दोनों को तुम proof मानोगे कि 0 तो नहीं है, right? Similarly, beta 2 hat is equal to 0 and beta 2 hat not equal to 0. So we are basically making claims like कि भाई हमारे population में क्या लगता है CGPA का कोई इफेक्ट होता भी है? CGPA क्या can CGPA explain any variation in the NEP satisfaction levels, right? The null is that the null hypothesis is that it cannot, and the alternate is that yes it can. Positive, negative, we don't know. We'll wait for the data to speak for itself, but we'll start with accepting either kinds of proofs. Similarly, family income से कोई फर्क पड़ता है क्या? Start with कोई फर्क नहीं पड़ता, null hypothesis, and then talk about accepting evidence in either direction. Cool. So the same kind of thing follows. All right. Okay. The third thing that the last thing that we'll do is in this, you also want to a lot of times test for joint hypotheses.
एंड इसमें जो सबसे कॉमन चीज है करने के लिए, वेर यू टेस्ट फॉर द एंटायर रिग्रेशन. So here what you're saying is, if suppose this is your model, right? So then you say that the hypotheses will look like this. H naught says that beta naught hat is equal to beta 1 hat is equal to beta 2 hat is equal to 0, right? Uh, beta naught hat hata do, beta 1 hat is equal to beta 2 hat, and HA is saying that H naught is not true. So यहाँ पे हमारा जो ये है ना नल हाइपोथेसिस, ये क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअली ये लोग जीरो है कि नहीं है. ये कह रहा है कि जब तुमने ये दोनों चीजों को इंक्लूड किया है तो तुम्हारा मॉडल किसी काम का है कि नहीं. ये दोनों मिल के या अकेले अकेले या जैसे भी करना हो, आर दे एबल टू जॉइंटली एक्सप्लेन वेरिएशन इन एनी पी, राइट? सो वी डोंट केयर हु एक्सप्लेन्स, कितना एक्सप्लेन, डजंट एक्सप्लेन. वी केयर के दोनों एक साथ कहीं जीरो तो नहीं है. क्या ये मॉडल मतलब यूजलेस तो नहीं है? दिस इज व्हाट इज द टेस्ट फॉर द एंटायर रिग्रेशन. और इस टाइप के रिग्रेशन, इस टाइप का टेस्ट को करने के लिए हम यूज करते हैं दी एफ टेस्ट, राइट? जिसका अगेन एफ इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज नोन वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्रिटिकल लेवल्स. तो हम उसके लिए यूज करते हैं, राइट? तो दिस इज दी टेस्टिंग फॉर दी होल मॉडल, कि पूरा मॉडल काम का है कि नहीं. उसमें से कौन सा वेरिएबल काम का है उससे हमें अभी मतलब नहीं है, बट पूरे मॉडल में एक्सप्लेनेटरी पावर है कि नहीं. For that, we use the F test. Okay. All right. So I will stop here today, and this finishes your usual, multiple hypothesis, multiple linear regression, the interpretation, the inference, और जो assumptions हैं, और assumptions usually मतलब क्या meaning है उनका और क्यों हमें चाहिए. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है कि वो क्यों चाहिए, है ना. अगर वो नहीं सेटिस्फाई होगी तो जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम इज एक्चुअली नॉट ट्रू. एंड इफ यू हैव थिंग्स दैट आर इन योर एरर टर्म कोरिलेटेड विद योर एक्सेस, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है अनबायस्डनेस का, वो प्रॉपर्टी तेल लेने चला जाएगा, राइट? तो तुम कितना भी रिपीटेड सैम्पलिंग कर लो, कितना भी सैंपल साइज बड़ा कर लो, तुम्हारा जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड नहीं होगा. यू विल बी रॉन्ग ऑन एवरेज, right? So that is why these assumptions are important. Okay, so this more or less covers whatever you've done in your fourth semester. Now in the next, and I think the last session, but if required, we'll have another session. What we will do is, first of all, we will discuss कि जो भी ये assumptions हैं, इनके जब violations होते हैं तो क्या दिक्कत आती है, right? We will also discuss the binary variable वाला एक छोटा section है, binary dummy variables and interaction term हम discuss कर लेंगे. उसके बाद we will discuss के जब एक एक करके we'll see कि suppose ये वाला assumption hold नहीं करता, suppose ये नहीं hold करता, ये नहीं hold करता, तो उससे हमारे क्या दिक्कतें आएंगी, right? At what points do the properties start failing, right? And then finally, the last thing that we will do in this is build the bridge between whatever you've done and what you're going to do, which is the bridge of causality, जहाँ पे हम एक्चुअली बात करेंगे कि हम अब क्या करना चाह रहे हैं और अभी तक के हमारे जितने भी मॉडल्स थे वो एक्चुअली किस चीज को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे थे, which is causality, establishing causality. All right. All right, so let's stop here, guys, and I will see you in the next session. Happy learning. Bye-bye.